It is the neonatal convulsion. Anyone of you who have seen the convulsion? किसी को सीजर होते हुए देखा किसी ने? हाँ. So it is always very frightening, and the parents become so worried कि क्या होगा. Some of them who has not seen previously, first time जो देख रहा होता है, that also it is also a very frightening thing to see a seizure disorder, right? So why it happens? It is due to the abnormal electrical discharges. ब्रेन में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं नॉर्मल. जब वो एबनॉर्मल होने लगे, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होने लगे, देन they manifest as seizure disorder. When this occurs in a child who is less than 4 weeks, we will call it as neonatal seizure, right? What can be the causes? Causes can be perinatal complications, right? जन्म से पहले ही बर्थ एस्फिक्सिया हो गया बच्चे को, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगी ड्यूरिंग डिलीवरी, देन दीज कैन अकर. समटाइम्स मेटाबॉलिक hypoglycemia. Last time we read about this hypoglycemia. If it is severe, then it can cause convulsions. Hypocalcemia, hypomagnesemia, pyridoxine B6 pyridoxine deficiency. Thirdly, infection. Can be meningitis, encephalitis, or torch group of infections when the brain is involved due to infections. Sometimes developmental delays. The child is having microcephaly. We have read about the neonatal examination, then I told you about the microcephaly, hydrocephalus, and similarly agenesis of the corpus callosum. These are some of the congenital abnormalities which can also cause seizures. Drug-induced, narcotic and sedative withdrawal. What does this mean? Sometimes a narcotic drug has been or a sedative drug has been given to the mother for any condition of hers, and as the child delivery takes place, the concentration of this drug automatically decreases in the blood of the child. So it can lead to seizures. Or theophylline and local anesthesia. So if these drugs have been given to the mother, then these can cause convulsions because they will pass on to the child. And these drugs will cause convulsions as their concentration will fall from the child's blood. So the convulsions in the newborn, they are not that type of seizure which you might have seen a person having seizure disorder. इनमें कैसा होगा? These are called subtle seizure. Subtle seizure क्या कि मदर में से कि जी ऐसे ही बच्चा देखता ही रहता है, ऐसे ऐसे करके एक और ही देखता रहता है. So it may be कि seizure है उसको, और there may be blinking, ऐसे ऐसे करके कर रहा है बच्चा, राइट. समटाइम्स मदर में कि नहीं कुछ नहीं, दूसरा कह सकता नहीं है कुछ, ये तो नॉर्मल है. तो ऐसे ऐसे करके आंखें को बार बार जब फिर ठीक हो गया फिर करता है. सकिंग इज नॉर्मल आल्सो, बट हियर इट विल बी अबनॉर्मल विदाउट एनी, ऐसे करके. और लिप स्मैकिंग, ऐसे ऐसे करके बच्चा लेटे लेटे वैसे ही कर रहा है, कुछ देर किया, देन द चाइल्ड स्टॉप्स आल्सो. साइकिलिंग, एबनॉर्मल सी मूवमेंट कर रहा है, जैसे साइकिल चलाना हो या स्विमिंग की मूवमेंट कर रहा है. और एपनिया, आफ्टर सम टाइम द रेस्पिरेशन स्टॉप्स फॉर सम टाइम एंड देन इट रीस्टार्ट्स आइदर विद स्टिमुलेशन और स्पॉन्टेनियसली. मदर क्या बोली कि जी बीच बीच में इसका सांस रुक रहा है, देखो क्या है. सो दैट मे बी द अनदर सटल फॉर्म ऑफ सीजर. और टैकीकार्डिया, आपका वहाँ पे मॉनिटर आपने लगाया हुआ बच्चे को, तो ऑन द ईसीजी जो उसके ऊपर आ रही है, यू मे फाइंड
कि देयर आर सम बर्स्ट, कुछ देर आया जब हार्ट रेट बहुत फास्ट हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो गया जो अपना रेंज है। सो दैट बर्स्ट ऑफ इंक्रीज्ड हार्ट रेट मे बी ए टाइप ऑफ सटल सीजर। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक, जैसे आपने सम ऑफ यू हु हैव सीन देयर में भी ऐसे ऐसे करके जो जर्की मूवमेंट्स होती हैं, दीज कैन अकर, बट इन द न्यू बॉर्न दीज आर मोर कॉमन सटल सीजर। मल्टीफोकल, जिसमें सभी लिम्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फोकल क्लॉनिक, ओनली वन लिम्ब, बाकी लिम्ब ठीक है, सिर्फ एक लिम्ब में ये टॉनिक क्लॉनिक कंपोनेंट आ जाता है। टॉनिक क्या कंपोनेंट है, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? टॉनिक इज जब ऐसे शरीर अकड़ जाए, टॉनिसिटी गेट्स इंक्रीज। क्लॉनिक इज ऐसे ऐसे झटके लगने, दिस इज क्लॉनिक कंपोनेंट। सो टॉनिक क्लॉनिक मीन्स बोथ कंपोनेंट्स आर देयर। टोन इज इंक्रीज, ऐसे करके और लिम्ब्स की, आप उसको बच्चे को उठाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई बोर्ड उठा लिया है, उसमें टोन इतनी ज़्यादा इंक्रीज है। और क्लॉनिक टोन भी इंक्रीज है, साथ में ऐसे ऐसे करके आर्म्स की क्लॉनिक मूवमेंट भी हो रही है। इन सम इट में भी कि अकेली टॉनिक की मूवमेंट है, टॉनिक है क्लॉनिक नहीं है। समटाइम्स इट में भी कि टॉनिक कंपोनेंट कम है, क्लॉनिक ज़्यादा है। सो दिस विल बी डिस्क्राइब्ड एज पर द चाइल्ड कंडीशन। मायोक्लॉनिक, मायोक्लॉनिक इज जर्किंग मूवमेंट, ऐसे करता है जर्किंग, दीज आर द मायोक्लॉनिक मूवमेंट। व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट इज फर्स्ट लाइन जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन होंगी, सीबीसी, ब्लड शुगर, सीरम कैल्शियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज, ब्लड कल्चर, लंबर पंक्चर, ultrasound of the head, EEG, right? Second line investigation, CT, MRI, torch serology, and similarly inborn errors of metabolism assay. So how will you treat? First, whenever a child lands up with convulsions from outside, or the child is already in your hospital and starts convulsing, then what you will do? First step will be the ABG. Airway, A is for airway maintenance, breathing and circulation. आप बच्चे को पोजीशन बनाओगे ताकि उसकी जो सिक्रीशंस हैं उसके एस्पिरेट ना करे। ब्रीदिंग के लिए यू मे पुट ऑन द माउथ पीस, और समटाइम्स यू मे नीड टू पुट द एंडोट्रेकियल ट्यूब आल्सो, ताकि उस पेशेंट को प्रॉपर सांस आता रहे और उसकी सर्कुलेशन होती रहे। यू विल पुट इन द IV ड्रिप इमीडिएटली, राइट? सो आफ्टर दिस इनिशियल स्टेबलाइजेशन आपका सेकंड एम क्या होगा कि सीजर जो है वो स्टॉप हो, टू स्टॉप द सीजर। थर्ड इज प्रिवेंट सीजर। प्रिवेंट सीजर मीन बच्चे को अभी आपने कोई इंजेक्शन दे दिया, उस इंजेक्शन का जो इफेक्ट है मान लो हाफ एन आवर 1 आवर रहा, अगेन इट स्टार्ट्स कन्वल्सिंग, दैट शुड नॉट हैपन। सो दिस मीन प्रिवेंट द रिकरेंट। थर्ड इज यू हैव टू फाइंड द कॉज कि जो कन्वर्शन बच्चे की हुई क्यों हुई, देन यू विल नीड टू ट्रीटमेंट ऑफ द etiology. So there may be electrolyte imbalance also, as we have discussed the cause, right? There may be, then if there is a hypoglycemia, then what will you do? 2 ml per kg IV, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। This sometimes is given even without getting the blood sugar levels, hypoglycemia, and then continuous infusion can be given at the rate of 8 milligram per kg per minute, right? Then hypocalcemia, this will be 10% solution of calcium gluconate, 1 to 2 ml per kg. This will be given very slowly, 5 to 10 minutes. This you will be giving after documentation. Documentation means कि आपने blood calcium level, serum calcium करवाए, they are below 7, then you will give this.
but this can be given even without waiting for the report. Then anticonvulsant. So in the protocol, first preference is either for diazepam or lorazepam. Diazepam 0.1 to 0.3 milligram per kg. It is given IV slowly. Let us say it is a 3 kg child, then 0.3 to 0.9, 1 milligram तक आप उसको IV दे सकोगे, and you will be giving it in say 1 minute, right? Lorazepam dose is only 0.05 to 0.1 milligram. So dose is less here, and what is the effect? The respiratory distress with this can happen, but with this respiratory distress chances are less. And secondly, the effect of this lorazepam is much more prolonged. The effect of diazepam is for some time. It is a short acting. So let us say you have given IV diazepam and you do not give any other anticonvulsant. What will happen? That after say 1 hour or so, again convulsions can take place. So what you will do? You will, along with this, you will give one of these two. These are long-acting anticonvulsants. Phenytoin 20 milligram per kg IV slowly, or phenobarbital 20 milligram per kg IV. So this is in nutshell a brief review of the neonatal convulsions. So if you want to ask, you can ask.